So, namaskar all of you. Odisha Civil Service 2025 मेंस एग्जाम रो आरोहण क्लासेस रो जो हमरो जीएस रो टेस्ट सीरीज चलची तार आज हमें टेस्ट नंबर 4 विषय रे कथा हबा। टेस्ट नंबर 4 एटा जीएस पेपर 1 संगे रिलेटेड ओडिशा हिस्ट्री संगे रिलेटेड तार जदि हमें डिटेल सिलेबस देखिबा तो डिटेल सिलेबस रे हमर रहउची डायनास्टिक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा महा मेघवान खारवेला द भौमकरस एंड द सोमवंशीस द गंगास एंड द गजपतिस अर्ली रेजिस्टेंट मूवमेंट इन ओडिशा पाइका रेबेलियन वीर सुरेंद्र साई एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रिएशन ऑफ ओडिशा प्रोविंस फ्रीडम मूवमेंट एंड प्रजामंडल मूवमेंट्स इन ओडिशा सोशल बेसिस ऑफ ओडिया नेशनलिज्म इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन ओडिशा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन ओडिशा एगुड़ा आपनकर रहउची मेन। अच्छा आ भितरे आमे स्टार्ट करबा आज प्रथम 5टा क्वेश्चन रो डिस्कशन सब एंटायर 55 टा टेस्ट अछि हमर टेस्ट सीरीज रे जदी टेस्ट सीरीज रो डिटेल्स हमें देखिबा ताले टोटल हमर 55 टा टेस्ट सेथरे रहउची ऑप्शनल 13 टा ऑप्शनल रो टेस्ट रहउची जो थरे कि ईच ऑप्शनल रे 16 टा टेस्ट रहउची आउ एक्सपर्ट इवैल्यूएशन आपनकर 4 दिन भीतर करके दिया होछ। तो ऑलरेडी एटा जुलाई रु स्टार्ट हे गलानी बैच 1 बैच 2 अगस्त 1 रु स्टार्ट हेची और लास्ट बैच जोटा बैच 3 आर अगस्त 10 तारिख रु स्टार्ट हबो। ओके तो एथरे कोन रहउची प्रॉपर कवरेज रहउची एंटायर सिलेबस कवर रहउची तापरे एक्सपर्ट इवैल्यूएशन और डाउट क्लियरेंस रहउची 4 दिन भीतर आपनको इवैल्यूएशन होची प्रॉपर मॉडल आंसर्स रोची और ताजरे करंट अफेयर्स रो भी जहा आपनकर रेलेवेंट करंट अफेयर्स अछि रिसेंट करंट अफेयर्स अछि सब एथरे ऐड होची। ओके मॉडल आंसर रे भी और तार वैल्यू एडेड मटेरियल हिसाब रे भी रोची जदी कोठी डाउट हैला रिलेटेड टू द टेस्ट सीरीज किछि आंसर अपन लिखि चंती से तार क्लैरिफिकेशन दरकार होची ताले 24/7 ऐप और व्हाट्सएप सपोर्ट से थरे रोची। ओके सो जीएस और कंपलसरी टेस्ट सीरीज गोटे रहउची 55 टा टेस्ट होची एथरे आर कोर्स फी क्लासरूम रे जो मान दउचंदी 5000 ऑनलाइन 4000 रहउची। ऑप्शनल टेस्ट सीरीज तापरे ऑप्शनल टेस्ट सीरीज हमर 13 टा ऑप्शनल ओके जोटा कि सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री पबैड हिस्ट्री होम साइंस एंथ्रोपोलॉजी फिलोसॉफी साइकोलॉजी एजुकेशन और लॉ एगुड़ा रहउची। ओके एथरे 16 टा टेस्ट रहउची आउ जदी आपनर बैचेस करिका देखिबे तो जीएस और कंपलसरी पई हमर फर्स्ट बैच स्टार्ट हेतला जुलाई 20 रु सेकंड बैच अगस्त 1 रे स्टार्ट हेची और लास्ट बैच टा अगस्त 10 रे स्टार्ट हबो। सेम आपनकर क्वेश्चंस और कंटेंट एति की आपनकर जो गैप टा मिलिबो ईच एग्जाम रे सेटा अलगा रहिबो। ओके तो बैच 3 रो सबटु कम गैप्स आपनकर रहिबो। ठीक सेम दी ऑप्शनल सब्जेक्ट जदी अपन देखिबे 13 टा ऑप्शनल जोटा मु डिस्कस करली तो बैच 1 जुलाई 15 रु स्टार्ट हेची बैच 2 अगस्त 1 रु और लास्ट बैच अगस्त 10 रु स्टार्ट हबो। ओके सो नाउ लेट अस कम टू द डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन को आसंतु एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द डायनेस्टी ऑफ महामेघवान अंडर खारवेल इन ओडिशा एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर रीजन्स आइडेंटिटी। तो फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल कोन आपण अंडरलाइन करिवे क्वेश्चन रो रिक्वायरमेंट रो एनालाइज कोन करिवे तो डायरेक्टिव कीवर्ड हैला एनालाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन हैला दी तीन पॉइंट भी लिखिबा किंतु हेडिंग एया हबो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशन कल्चरल कंट्रीब्यूशन ओके एंड तीन थर्ड जिंस जोडा पचारला सिग्निफिकेंस फॉर रीजन्स आइडेंटिटी। सो तीनटा हेडिंग्स रे आपन को लिखिया पड़िबो। सो लेट अस स्टार्ट देन
गोटे शॉर्ट और पावरफुल इंट्रोडक्शन देबे इंट्रोडक्शन आपन को बुझिया पई एठी हेडिंग दिया है इंट्रोडक्शन परीक्षा खाता रे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लेखा हबनी आई रिपीट परीक्षा खाता रे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लेखा हबनी ठीक अछि सो बेसिकली खारबेल को ऊपर ओके गोटे कि दीटा सेंटेंसेस भीतर जिते मैक्सिमम फैक्ट्स आपण और जिते आगु को जहा हमर आंसर रे लिखा होची ताकू केमती पैक करि परिबे जेमति कि एठी देला द महाभैगवान डायनेस्टी लेड बाय खारवेल मार्क द गोल्डन एज ऑफ अर्ली ओडिसा's पॉलिटिकल पावर एंड कल्चरल अवेकनिंग ओके तापरे नोन प्राइमरीली थ्रू द हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शंस एट उदयगिरी तो सोर्स टा आपण कहले प्राय आपण खारवेलंकर ओके ताकर जो रेनल इयर्स विषय रे कोठु जानुचंती ताकर जो सक्सेस विषय रे कोठु जानुचंती तो एटा मेनली हाथी गुंफा इंस्क्रिप्शन खारवेल's reign reflected strong governance military expansion cultural patronage that shaped Odisha's historical identity now directly अपन आसीबे जो तीनटा जिंस से पचारची फर्स्ट हैला एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशंस सेथरे एफिशिएंट गवर्नमेंट ओके सो आफ्टर the Mauryan power okay Kharavela made Kalinga great again okay through structured taxation public works and welfare measures okay so efficient governance सबहेडिंग गुडा मन रखिबे तापरे ता भीतर जहा गोटे लाइन लिखिया कथा सेटा आपण जहा बुझचंती निज मनरु लिख परिबे एमति नै कि मॉडल आंसर को घोषि देबे ठीक अछि किनु हेडिंग्स गुडा सबहेडिंग्स गुडा से गुडा मोर और लेस सेम रखिले बेटर तापरे आसिला पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो 10 मिनिट्स 10 पॉइंट ओके 11 मिनिट्स टू टिके कम भीतर मते सारिवार अछि 15 मार्क क्वेश्चन टा तेणु सेति गोटे गोटे लाइन ही लिखिबार अछि केते जण मु देखुची टेस्ट सीरीज रो इवैल्यूएशन रे से माने खाली हेडिंग्स दे के छाड़ दन नो एक्सप्लेनेशन सेटा बहुत जण करछन बट बेटर हबो अपन जदी लिखि परिबे किछि ओके पूरा सेंटेंस लिखियो नि फ्रेज टा भी लिखियो किंतु केवल सबहेडिंग्स दे के वेरी स्केची ही जीवो आउ सेथरे मार्क्स कमिबार भी संभावना अछि ओके तापरे कोन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो से जो एक्जिस्टिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर थिला जोडा नंद डायनेस्टी वरिका बनैथिले महापद्म नंद एंड सेगुडा भी से ठीक ठाक करथिले और नुवा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनैथिले ओके तापरे रेवेन्यू एंड जस्टिस तो एथरे भी से बहुत गुडे कंट्रीब्यूशन करथिले लैंड ग्रांट्स मार्केट रेगुलेशन ओके तो एज अ रिजल्ट तार लाभ कोन हैला कि स्टेट रो जो रेवेन्यू टा सेटा गोटे स्टेबल रेवेन्यू स्ट्रीम अपन कर रहला तापरे आ गोटे जस्टिस कथा जतले हम कहूचु लीगल फेयरनेस ओके ही वाज वेरी जस्ट टू एवरीवन ठीक अछि सो ही वाज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ हिज जस्टिस तापरे मिलिटरी ऑर्गेनाइजेशन तो ताकर जो मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट्स अछि ओके एपटे नॉर्थ रे देखिले मगध एंड अदर प्लेसेस आल्सो आउ साउथ आड़ को गले सतवाहनास गरिका तेणु कलिंगर प्रेस्टीज टा से आउरी बढ़ेले तापरे तांकर जो चीफ क्वीन थिले एटी गोटे जिनस मन रखियो जो माने मेनली ऑप्शनल नहीं चंती हिस्ट्री रो तांको क्वीन को एग्जैक्ट ना कोन केते जगह रे हमें जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिसा रो भी केते आपण जो ओडिसा रिव्यू रे सिंधुला देछि ओके आउ केते जगह रे एटा विजय महादेवी देछि चीफ क्वीन कर ओके सो हमरो एक्चुअली नाटा लिखा दरकार नहीं जस्ट चीफ क्वीन खाली लिखि देला हम चलिबो वुमेन्स पार्टिसिपेशन स्पेशली जो रिलीजियस ग्रांट्स करिका रहउतिला टू ऑल रिलीजन्स ओके जैनिज्म बिकॉज़ सी निजे जैन थिले एंड अदर रिलीजन्स आल्सो सेतले जो इंडिक रिलीजन्स थिला ओके द सनातन धर्म जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से सब को हेल्प करूथिले सब को पैट्रोनेज दोथिले ओके सो वुमेन्स पार्टिसिपेशन द क्वीन करो पार्टिसिपेशन थिला ठीक अछि तापरे आसिला से तीन टाइम से कहितला एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चरल और सिग्निफिकेंस एबे कल्चरल कंट्रीब्यूशन को आसंतु पैट्रोनेज ऑफ आर्ट एंड कल्चर बेस्ट एग्जांपल हैला द उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स ओके तापरे प्रमोशन ऑफ जैनिज्म तो धर्म ऊपर ताकर फोकस थिला और सेटा केमती स्प्रेड हबो ओके म्यूजिक एंड फेस्टिवल्स जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन में हम देखिछु कि से ताकर विक्ट्री परे कि जनरली लोकों को रिक्रिएशन पई फेस्टिवल्स म्यूजिक फेस्टिवल्स से सब जिंस वाला करथिले ओके तापरे लिटरेरी सिग्निफिकेंस सो से जो अपन हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन इन इटसेल्फ
सेटा ही गोटे बहुत बड़ लिटरेरी सिग्निफिकेंस तार अच्छी ता छड़ा जो डेवलपमेंट ऑफ ओडिया स्क्रिप्ट ओके अर्ली डेवलपमेंट घरिकारे भी ओके कंट्रीब्यूशन रही तापरे जोटा थर्ड पॉइंट पचारला सिग्निफिकेंस फॉर ओडिशास आइडेंटिटी तो कलिंगन प्राइड को रिवाइव कले ओके अशोक पर कि मॉडर्न पीरियड पर तापरे नेक्स्ट है सिंक्रेटिक कल्चरल फाउंडेशन ले कले ओके तो से जैन्स करो वैल्यूज भी थिला से एग्जिस्टिंग जो रिलीजन्स करिका थिले ओके बुद्धिज्म होला कि अलगा रिलीजन भी जोटा थिला ओके दैट इज ब्राह्मणिज्म एंड ऑल तो सब को से पैट्रोनेज दौथिले मेनली मोर सो फॉर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म ओके बट ही वाज नॉट अ persecutor of any particular religion okay so it formed the nucleus of Odisha's enduring cultural identity तापर असला conclusion heading दिया होनी conclusion आपन को बुझिया पे कल दिया ही okay so balance of power pity and prosperity ठीक है जी तो so his reign was a symbol of Odisha's renaissance ठीक है administrative reforms and cultural patronage created the bedrock of Odisha's political unity and spiritual richness एही टर्म उडा political unity कॉमन spiritual richness हे गला अपन जदी लेखिया पे अपन असुविधा होय माने निजे अपन इंग्लिश रे फॉर्म करनोती सेंटेंसेस उडा ताले ए टर्म्स उडा भी अपन लिखि दी परिबे ओके 289 वर्ड्स रो आंसर अपन को रहलो जदी देखो क्विकली रिवाइज करिवे जा हम लिखि जो सेटा तारा माइंड मैप ता भी अछि ओके जदि आप दी पेज पढ़िया पे समय होनी ताले एटा भी पढ़ देले एका जिंस हो हैला तापरे क्वेश्चन 2 को आसम कंपेयर द रूल ऑफ भौमकरस एंड द सोमवंशीस इन ओडिशा इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस पॉलिसी एंड टेंपल आर्किटेक्चर ओके तो फर्स्ट जिंस अपन अंडरलाइन करंतु क्वेश्चन रो रिक्वायरमेंट कोन अछि ओके कंपेयर तो कंपैरिजन ओके सो कंपेयर हला एटा डायरेक्टिव कीवर्ड ता भौमकर रूल आउ सोमवंशी रूल को टर्म से जति की पचाची सेति के लेक्चर अछि रिलीजियस पॉलिसी और टेंपल आर्किटेक्चर बस एति ओके तो इंट्रोडक्शन रे भौमकर केबे रूल करथिले सोमवंशी केबे रूल करथिले सेटा लिखिबे ठीक अछि सो mark two key phases that is the Bhaumakaras and the Somavamsis they mark two key phases of Odisha transition from Buddhist pluralism to temple centered Hinduism okay so their reigns represent both continuity in political structure and transformation in religious and architectural identity political structure रे continuity किंतु change होची कोथरे religious और architectural identity हमको विशेष सही पचारची रिलीजियस पॉलिसी और टेंपल आर्किटेक्चर विषय तो प्रथम रिलीजियस पॉलिसी रू स्टार्ट करिबा फर्स्ट कम टू द भौमकरस तो भौमकर अपन जानचंदी से माने बेसिकली बुद्धिज्म इनिशियली जो तंगरो ओके दे वर बेसिकली बुद्धिस्ट ओके और तांको समय रे वज्रयान बुद्धिज्म ओडिसा को आसिला राइट तापरे से डेवलप से हिसाब रे रत्नगिरी ललितगिरी उदयगिरी ओके मेजर मोनास्टिक सेंटर्स डेवलप हैला ता परे जो रूलर्स माने आसिले से माने शैविज्म और वैष्णविज्म को ओके पैट्रोनेज देले ताकर बहुत जेमति की वुमन रूलर्स माने भी थिले क्वींस माने भी थिले जो माने शिवाइट्स थिले और वैष्णवाइट्स थिले ओके ता माने कोन अपन जो देखिबे सो इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मेनली बुद्धिज्म बिकॉज़ दे वर ओरिजिनली बुद्धिस्ट एंड आल्सो शिविज्म एंड वैष्णविज्म हला सोमवंशीज ऑन द अदर हैंड ताकर शिविज्म स्टेट रिलीजन थिला okay and that is why you can see many major Shiva temples coming up during their period Somavamsis का okay तो बुद्धिज्म रो डिक्लाइन आस्ते आस्ते से टू स्टार्ट हैला Somavamsis को टाइम रे okay आउ जगन्नाथ ट्रेडिशन आस्ते आस्ते राइज कला ठीक है सो भौमकर सिंबलाइज्ड इंक्लूसिविटी ओके कहना सब रिलीजन से माने निजे बुद्धिस्ट ले भी से माने दे वर डिवोट मेनी ऑफ देयर किंग्स एंड क्वींस वर डिवोट Shaivas and Vaishnavites, Shaivites and Vaishnavites. Okay. Somavamsis को यदि कहबा religious consolidation that prepared the ground for later Ganga era Hindu resurgence. Okay. तो एटा तारो
आ गोटे मेजर डिफरेंस सेकेंड जिनस कहला कि टेम्पल आर्किटेक्चर रे कौन डिफरेंस अछि सो भौमकर को टाइम रो जदी आपण टेम्पल्स देखिबे मेनली तंगर फेमस टेम्पल्स हला जो खाखारा टाइप रो टेम्पल जेमति कि आपण वैतल देउळ देखिबे जोठी चामुंडा देवी को पूजा करा हुए तापरे आउ 64 योगिनी टेम्पल ओके जोटी की हीरापुर रे ओके तो सेटा हला ओपन एंड राउंड रूफ्ड टेम्पल सेठी भी शक्ति पूजा ही करा हुए ओके सो ताको टेम्पल्स रे कौन थिला एक्सपेरिमेंटेशन कंबाइनिंग बुद्धिस्ट शैव एंड तांत्रिक एलिमेंट्स सोमवंशी टेम्पल्स रे किंतु जदी आपण देखिबे जो रेखा देउळ आ पीढ़ा देउळ रो कांसेप्ट स्टार्ट हे जायतिला सेतेबेले जेमति कि मुक्तेश्वर रे आपण देखले ब्रह्मेश्वर मंदिर रे लिंगराज मंदिर रे ओके सो रिच स्कल्पचर ऑर्नेट गेटवेज मुक्तेश्वर टेम्पल रे स्पेशली ओके मुक्तेश्वर टेम्पल इज मेनली नोन फॉर द गेटवे ओके आ वर्टिकल एलिवेशन तेणु सेटा जो कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रा आपण गुडे जिंस सेतरे पाइबे ओके तो जदि हमें टेम्पल आर्किटेक्चर को कंपेयर करिबा ताले भौम आर्किटेक्चर वाज ट्रांजिशनल एंड मॉडेस्ट ओके ट्रांजिशन होतिला ओके एंड सोमवंशी आर्किटेक्चर वाज मॉन्यूमेंटल एंड रिफाइंड बड़ टेम्पल्स थिले ओके जोटा कि कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रा फाउंडेशन उडा ले हला सेठी आपण कहि परिबे ओके कल्चरल सिग्निफिकेंस ताले कोन भौम प्लूरलिज्म सस्टेन्ड आर्टिस्टिक diversity and religious harmony. Hello. Somavamshi patronage transformed Bhubaneswar into a center of Shaiva devotion and architectural excellence. तापर आपण दी लाइन रो प्रॉपर कंक्लूजन दे परिबे ए जो मॉडल आंसर ता 272 वर्ड्स रो ठीक अछि जदि आपण को जल्दी तक मन रखियार अछि तो गो थ्रू द माइंड मैप ओके जेतेबेले आपण आंसर ता लिखुचंती आ ताको सबमिट करूचंती तो सेटा फर्स्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट सरला तापरे एते डिटेल जो एनालिसिस आपण को मिलुची मे बी आपण को खाता ता 30-40 पेजेस हेतिबो इवैल्यूएशन कला परे इवैल्यूएशन ही तारो ताटू बेसी हे जाय पारे ओके काना ईच एंड एवरी एरर जोटा अछि केमिति बेटर करियो आंसर को सेटा आपण को ओके डिटेल से दिया तो सेटा पढि सरले परे यू अटेम्प्ट इट अगेन सेट पई बहुत इंपोर्टेंट कि आपण जहां भी टेस्ट सीरीज लिखुचंदी ताको रिवाइज करिवे स्पेशली जीएस करी करी जोठी कि एटा तो अबे हिस्ट्री हला एतरे ते करंट अफेयर्स रो सेमति नै ओके बट करंट अफेयर्स एते कोन होई परिबो कि कोठी कोन ओटे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हे गला को जगहटा कि सेही जगह न्यूज रे थिला व्हाटएवर सेमति आपण कहि परिबे पॉजिटिव सेंस रे ओके किंतु अलगा जो पेपर्स रो अछि जेमति कि इकोनॉमिक्स करी का हे गला ओके सेथरे तो ऑब्वियसली आपण को रिसेंट डेटा करिका दबा पई पड़िबो किछि वैल्यू एडिशन आपण चेष्टा करिवे जेमति सेथरे हबो ओके सो दोस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हिच पहले 3 नंबर क्वेश्चन को आसंदो एग्जामिन द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ ईस्टर्न गंगास एंड देयर लेगेसी इन ओडिसास मेडिवल हिस्ट्री ओके सो अंडरलाइन को एग्जामिन हला डायरेक्टिव कीवर्ड मेजर अचीवमेंट्स ऑफ ईस्टर्न गंगास मेजर अचीवमेंट्स के बाद नंबर 1 एंड देयर लेगेसी इन ओडिसास मेडिवल हिस्ट्री ओके सो 1 or 2 लाइन्स रो प्रॉपर इंट्रोडक्शन देबे ओके द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज ऑफ मेडिवल ओडिशा symbolizing political unity and cultural brilliance. The rule blended territorial expansion, temple architecture, spiritual patronage, shaping Odisha's medieval identity. So major achievements कौन first है political unification. Okay, different जगह को जैसे कि कलिंगा, okay, उत्कल, parts of Andhra ताकू unify कले. तापरे administrative efficiency. Okay, so it was divided into mandalas and vishayas. Okay, तेनु effective revenue और defense management तो द्वारा ही परला. Architectural excellence तो जो temples घरी का अच्छी, okay, जगन्नाथ temple, कोणार्क temple, okay, so that was the zenith of Kalingan school of architecture. Cultural and linguistic growth,
तेणु से संस्कृत की पैट्रोनाइज कले एंड इमर्जिंग लोकल लैंग्वेज दैट इज ओडिया लैंग्वेज टाको भी प्रमोट कले ओके तापरे रिलीजियस सिंथेसिस सो वैष्णविज्म शिविज्म और शक्तिज्म सब को से पैट्रोनेज दौथिले एंड दे आल्सो ओके worshipped and promoted the culture of Lord Jagannath और सेटा गोटे रीजनल आइडेंटिटी गोटे रीजनल यूनिटी रो सिंबल से माने कल लेगेसी तंकर कौन रहिला कल्चरल आइडेंटिटी ओके तो जो मेजर टेंपल सिटीज ओडिसा रो पुरी भुवनेश्वर कोणार्क became the triad of Odisha sacred geography आर्टिस्टिक हेरिटेज रे तंकर जो सब टेंपल्स हैला ओके जोडा कलिंगन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट फेज अपन कहि परिबे तापरे पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पॉलिसीज लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द गजपति डायनेस्टी और सिंबल ऑफ यूनिटी जोटा कि लॉर्ड जगन्नाथ कल्चर ओके इट इवॉल्व द जगन्नाथ कल्चर evolved into core of Odisha's collective identity transcending caste and okay sect ठीक है देन गोटे छोट कंक्लूजन देबे 232 वर्ड्स अछि त माने आउ भी आपण 18 टा वर्ड देई परिबे ओके आउ तार माइंड मैप जदी आपण देखियार अछि जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन पे एटा आपण यू कैन गो थ्रू दैट ओके सो क्वेश्चन 4 को असंदु discuss the role of Gajapati dynasty in consolidation of Odisha in the late medieval period Gajapati dynasty okay पूछरे consolidation of Odisha keyword पहला discuss okay consolidation of Odisha in the late medieval period so number 1 first part of the question second part कौन and their relation with neighboring states दीटा जाको आपण कवर करियार अछि okay so Gajapati dynasty marked Odisha's medieval power okay through conquest administration and cultural patronage the Gajapati shaped Odisha's political and religious identity तो first पहुंचले consolidation of Odisha तो सेतरे territorial expansion okay कोठू को पर्यंत सेटा देखिबे कपिलेंद्र देवंकर okay गंगा in the north Kaveri in the south okay तापरे administrative organization so they basically govern from Cuttack dividing the empire into provinces under the Rautrayas and the Amatyas okay tapare religious integration jodi apan dekhibe okay elevated the Jagannath cult as the center of royal ideology so they mainly promoted Vaishnavism and they were tolerant towards other sects like Shivism and Shaktism cultural patronage Odia language and literature flourished under royal support किछि examples आपण दे परिबे कपिलेंद्र चरिता and सरला महाभारत ओके तबरे ई पार्ट इंपोर्टेंट रिलेशन विथ नेबरिंग स्टेट्स सेकंड पार्ट उडा पचरला बंगाल एंड जौनपुर ओके डिफीटेड बंगाल रूलर्स एक्सटेंडिंग हिज कंट्रोल टू नॉर्दर्न फ्रंटियर्स देन Bahamani and Vijayanagar so Gajapati's occupied parts of Telangana and coastal Andhra later conflict with Vijayanagar under Krishnadevaraya checked their expansion तो आप बेसी expand कर पा लेनी okay diplomacy and trade dynasty maintained maritime connection through ports like Chelitala and Palor okay तो examples जे आपण दे परिबे capture of Devarakonda okay and Purushottam Deva's campaigns okay over coastal Andhra so 243 words eta এটা তার মাইন্ড ম্যাপটা এই সেশনর লাস্ট কোশ্চেন ইভালুয়েট দ্য কজেস কোর্সেস এন্ড কনসিকুয়েন্সেস অফ পাইকা রেবেলিয়ন তিনটা आंसर পচারলে রিপিট কোশ্চেন এটা সববেলে কজেস কোর্সেস এন্ড কনসিকুয়েন্সেস হলা 11 মিনিটরে লিখিয়ার আছে 10 পয়েন্ট সামথিং 11 ধরন্তু তেণু সেই হিসাবে ম্যাক্সিমাম 2-3 পয়েন্ট হি লিখি হবো পয়েন্টস বহুত আছে কজেস তো 10-12টা পয়েন্ট আছে লিখি পারিও কি আমি নাই ओके तो जति की लिखि होबो आपण सेति की लिखिबे सो दैट 11 मिनिट तळे आपनकर आंसर ता सरीबो ओके इट सिंबलाइज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन causes loss of privileges okay the Paikas the traditional militia of the Khordha kings lost their rent free lands or jagirs
and military privileges after British annexation of Khordha. तापरे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ब्रिटिश रो बहुत ही डिफिकल्ट ला तांकर सॉल्ट मोनोपोली एबोलिशन ऑफ द काउडी करेंसी ओके तेणु से माने आगुरु गोटे भलो पोजीशन रे थिले एबे से माने बेसिकली फार्मर्स टाइप एग्रीकल्चरिस्ट टाइप हो जेतले देन पॉलिटिकल डिसकंटेंट वाज देयर ओके खोरदा राजा को जो डिथ्रोन करायला एंड एग्जीक्यूशन ऑफ जय राजगुरु ओके देन there was also participation from tribals, mainly the Khans. Okay. Force of the rebellion, so led by Bakshi Jagabandhu, Pikers supported by Khandhas attacked the British outpost at Manapur and captured Khordha and Puri in 1817. Okay, spread जैसे देखिए revolt spread across coastal Odisha as people destroyed treasuries, police station and salt deposits. Suppression, the British retaliated with military force. Jagabandhu fled to jungles and later surrendered in 1825. Consequences कौन है लारा और दीटा consequence major. Immediate consequence है ला it was ruthlessly suppressed. The rebellion was crushed. Several reprisals followed with confiscation of Paiko estates and stricter British control. Long term कौन है ला it fostered a sense of Odia unity and pride. Okay तो later जो सबो movements करी का है ला freedom पाई से तरह एटा गोटे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कला सर्विंग एज ए प्रिकर्सर टू लेटर नेशनलिस्ट एंड ट्राइबल रिवर्स इन ईस्टर्न इंडिया लेगेसी कौन रहा जो द मार्शल ट्रेडिशन ऑफ पाइको अखाड़ास रिमेन्स ए सिंबल ऑफ ओडिशास रेजिस्टेंस एंड पेट्रोइटिज्म ओके 264 words and this is the okay other questions next जो questions हुआ रहेला 10टा क्वेश्चन that you will find in your app okay so जो division है ची test series रो 55 टा test रो ता बाहर प्राय questions पढ़िबा almost very difficult okay तो properly ताकू आपण लेखन्तु थरे रिवाइज करन्तु बहुत थर ओके आउ जदि मार्क्स कम आछि ताले ताकू आउ थरे लेखन्तु that is the best way of actually making the maximum okay from a test series any test series एथरे हो कि आपनकर ऑप्शनल रे भी हो okay so with that we will stop next time next session रे test number 5 को जिबा okay so thank you all namaskar